శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मणि अस्य यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని, మీ బంధువుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது முதலில் சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து விஸ்வக்சேன் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாவாஜனம். அந்த திருவேங்கடமுடியானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம் இப்பொழுது விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவாஜனத்தை சேவிக்க உள்ளோம். பக்தர்களே, திருமலை அப்பனை சேவிக்கலாம். வெங்கடாத்ரி சமம் ஸ்தானம் பிரம்மாண்டே நாஸ்தி கிஞ்சன, வெங்கடேச சமோ தேவோ நபூதோ ந பவிஷ்யத்தி என்பது போல அந்த பகவானையும் பிராட்டிமார்களையும் சேவிக்கலாம். இன்று ஆனி மாதம் மற்றும் திங்கள் கிழமை, விசேஷமான அதாவது பௌர்ணமி. இன்று மூல நட்சத்திரம். இதோ பக்தர்களை சேவிக்கலாம். விஸ்வக்சேன் ஆராதனை. ब्रह्मेश वन्द्यवरदम् अमृतं भजामि. भृग्वत्रिकस्य मरीच मध्ये स्थित्वासने कुसुमये समुदीरयन्तं श्रीशास्त्रसारमखिलं विखनो मणीन्द्रं भूयो नमामि भुवनैक गुरुं प्रसन्नं श्रीमते विघ्नसे नमः. भृगुमरीच अत्रिकस्य मेभ्यो नमः. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. यस्यत्वरदवक्त्राद्या पारिषत्या परश्शदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तवाश्रये. सर्वतस्मार्तादिकं कर्मनिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः. सूत्राणामन्यक्लु
क्लुप्तानां नेत्रं गिच्चस्तरीकृतं सूत्रं वैघानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम् ॐ भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवदानुगृहीतो भगवदानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् अनुमन्यतां प्राणनायम्या अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य स्त्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्जकर्मणि स्तण्डिलपरिपरिस्तरण सर्वोपकरणसुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यं कर्मकरिचन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यञ्जकर्मणि तरङ्गं करकाराधनं करिष्ये ॐ धारासुप्तशुनमानशेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये कृणोमि धत्तागुं सुचीरागुं सुशर्मा गिरमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतंवर्णये सहस्रं यज्ञजापाजावितरा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदपिट्नर्विश्वे देवामञ्जन्मरुतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे मुं वर्णमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्रधनमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि हाजमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रचेतसे नमः रक्ताम्रधनाय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जगापतिं सर्गयेदं सुपुष्पर्थवाहनं पूर्वाचारोत्तमं देवं दक्षिणामकमर्चयेत् आग्नेयुगस्मादजामहे त्वा विश्वे सदात्तं हितो न शुम्भो वैराजन्ते तु हतन्निधत्तां प्रयिष्यामदेशो विबधानामनादर्यामे सस्तान्दनितां दधात् पद्माकारमण्डले मुम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपतिर्गासमेत श्री विश्वक्सेनस्य गीतवासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुवायिने नमः सूत्रपत्यै नमः जगायै नमः सूत्रपतिर्गासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमवासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परशमात्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य युत्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराददं तद्विप्रासो विपन्यमोजाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं त्रिविनोदाद्रविणसस्तुरस्य त्रिविनोदास्सनरस्य प्रियं सदे द्रविणोदा वीरपदेमिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्वीदोपव्युषं यदा मयि सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ॐ भूः भूर्भुवस्वरमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाक्यञ्जकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्ते पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्त संकल्पित विधिवत् पुण्याहं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते
कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति ऋद्ध्यास्म हव्येर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्ते अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सदञ्जीवेमसरितस्सवीराः ओं भूः श्री भगवदाग्नया भगवत्किङ्करूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं श्री भूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः भगवद्यजनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मऋद्ध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मऋद्ध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मऋद्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथा तना महेरनाय शिवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः मुचतीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामभोजस्य क्षया यजन्वथा आपो जनयथा जनः ओं पवमानस्ववर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोता स पुनातुमा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनमोधिया पुनन्तु विश्व आयमः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतूगं व्रणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्ये भक्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः तुजामदन्तः सदमार्त्येष वयग्स्यामपतयोरयीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वातः प्राणिने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्दावनी जिग्निजे वा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानी दध्येति ऋषिभिः संभृतगं रसं सर्वगं सपूतमस्यादि सुदिदं मातरिश्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संभृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सत्पिर्मधूदकं पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतोरसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं पापमानीर्तिशन्तुनः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः संभृतोरसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सह मा पुनात् सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः मा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातभेषणं शन्नो अस्मद्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्रात्यां दिशि नेमार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्तां मदीत्यां दिश्याप मोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वायां दिशि ऋग्नः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां मदोधराधरैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रतिजानी यस्मान् स्वावेशो अनमेवो भवानः यत्वेमहे प्रतिदन्नो चतुष्पहिन्नयेधित्विपदे सञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे शक्मया सकुं सतादे सक्षीमहिरन्वयागातमत्या आवह क्षेमवदयो ये वरन्नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्या विशन् सखा सुषेवयेथिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं वस्यति वेतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्रघ्याचमणीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च அசுதேவாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவசனத்தை செவித்துக்கொண்டு இதோ இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ. அருணா. இதோ வைகான சாகம் சாஸ்திர முறைப்படி ஆரம்பமாகிய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே சேனா முதலி எனப்படும் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை முடிந்து அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். இன்று திங்கள் கிழமை பௌர்ணமி திதி
மூலம் நட்சத்திரம், அதாவது ஆஞ்சநேயருடைய நட்சத்திரம். சதா சர்வ காலமும் ராமநாம ஜபத்தை ஜபித்து கொண்டே இருக்கும் அந்த ஆஞ்சநேயருடைய திருநக்ஷத்திரம். அப்படி அந்த ஆஞ்சநேயருடைய விசேஷங்களை சற்று தெரிந்து கொள்ளலாம். அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்திலே நவதானியங்களை மண் பாலிகைகளிலே சேர்த்து நீர் சேர்த்து அதிலே அக்ஷதை புஷ்பங்களால் பூஜை செய்கிறார். தேவர்கள் எல்லாம் வந்து பகவானுடைய கருணா கட்டாட்சத்தை பெற வந்துள்ளார்கள். அவர்களையும் வரவேற்பதற்காகத்தான் இந்த கைங்கரியம். சிந்தூரம், அதாவது ஹனுமனுக்கு சிந்தூரம் ஏன், எதற்காக அந்த சிந்தூரத்தை அணிகிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது, அந்த சிந்தூர பூச்சு பெற்றதற்கு ஒரு வரலாகோ ரசம் சொட்டும் ஒன்று கர்ண பரம்பரையாக வழங்கும் அந்த கர்ணாமிருத்தம்தான் வரலாறு. அசோக வனத்தில் இருந்த சோக காலத்திலே தன்னை அலங்கரித்து கொள்வதில் அடியோடு நாட்டமற்று வாற்றமுட்டு இருந்தாள் அந்த கற்கரசி சீதா பிராட்டி. அவளிடமும் ஒரு அலங்காரத்தை கண்டு ஆஞ்சநேயன் ஆச்சரியமடைந்தானாம். அவளது நெற்றி உச்சியில் தீற்றி இருந்த சிந்தூரம்தான் அது. வானரர்களில் சுமங்கலிகள் சிந்தூரம் இட்டு கொள்ளும் வழக்கமில்லை போலிருக்கிறது. எனவே ஆச்சரியப்பட்டானாம். அவளிடமே கேட்டானாம், தாயே, தப்பாக எண்ண வேண்டாம். அணி பணியாவும் நீக்கிய உன் பவித்திரமான மதிமுகத்தை சோகமேகம் மூடி மங்கச் செய்திருப்பதால் பாவி ராவணனுக்கு உண்டாகக்கூடிய தகாத உணர்ச்சி இது மட்டுமாவது கட்டுப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வாறு இருக்க நீ செக்கச்செவேல் என்று இருக்கும் இந்த ஏதோ ஒரு பூஷணத்தை தரித்து கொண்டு அதன் வசீகரத்தை ஏன் விருத்தி செய்து கொள்ளுகிறாய் என்று கேட்டாராம் ஆஞ்சநேயர். ஆறாத துயரிலும் அதை கேட்டு அந்த சீதா பிராட்டி प्रतिसरबंधन देवताराधनं करिष्ये। ओम यमर्पयन्ते मनयो हविर्योजो हि दानर्विबुधा विराजन्ने तम यदोषायस्यान्नाग्न विपिनानि वदन्ति। ओम शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि। रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगत स्वस्ति देव्यनीतर निर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रभामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा आवन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं धासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति बध्यैरेपति स्वस्ति नगिन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धावनोचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दधताज्ञादाजानता सङ्गामेमहि स्वस्त्ययानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वाक्यसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं सवत्सु बृहत्यशो नावामिवारोहेम अम्भो मुचामाङ्गिरा सङ्गयं यस्वस्त्यात्रेयं मनसा जतार्क्ष्यम् प्रियादबानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तितं बाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभगं शुभाम्। ஓம் நமோ நாராயணா. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செவிக்க உள்ளோம். அப்படி ஆஞ்சநேயர் கேட்டவுடன் சீதா பிராட்டி அந்த துயரத்தில் கூட சற்று புன்னகை செய்து இவ்வாறாக கூறினாளாம் ஆஞ்சநேயருக்கு, மகனே, இது என் அழகை விருத்தி செய்து கொள்ளும் அலங்காரம் அல்ல. என் நாதனின் நம் பிரபுவின் ஆயுர் ஆரோக்கியங்கள் விருத்தி செய்து கொள்ளும் ரக்ஷையே இது. மணமான ஒரு மங்கையின் மாங்கல்யத்திற்கு காத்து அருளும் அந்த பரமபதங்கள் ரக்ஷை. அலங்காரமாகவும் இதை இரு புருவங்களுக்கிடையே இட்டுக்கொள்ளலாம். ஆனால் அவ்வாறு கார்நிற கஸ்தூரி, மை, சாந்து முதலியவற்றால் திலகமாக தரிப்பதுண்டு. அந்த பதியின் க்ஷேமத்திற்காகவே குங்குமம் எனப்படும் மங்கள சின்னமான இந்த சிந்தூரத்தை தான் மகாலட்சுமியின் வாசஸ்தலமான நெற்றி உச்சியில் வகிட்டில் தான் இட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்று என் துரதிர்ஷ்டத்திலும் ஒரு அதிர்ஷ்டமாக மாறி லங்காபுரியில் அமைந்துள்ள திரிகூட கூட
பர்வதத்தின் இந்த பகுதியில் சிந்தூர தாது பாறைகள் இருக்கின்றன. எனவே தினமும் அதை குழைந்து ஆரியபுத்திரரின் ஆரோக்கிய வளர்ச்சிக்காக இட்டுக்கொள்கிறேன் என்று கூறினாளாம். இதை கேட்டானோ எல்லையோ மாருதிக்கு மின்னலாக சிந்தனை பரவியது. எப்படி என்றால், பரமபக்தியின் பெருமையும் குழந்தை பிள்ளைத்தனத்தின் எளிமையும் ஒன்று கலந்து சிந்தூரம் இட்டுக்கொண்டால் நம் பிரபுவிற்கு நன்மை எனில் இந்த அம்மாள் மாத்திரம் ஏன் அந்த நன்மையை செய்ய வேண்டும், நானும் தான் செய்கிறேனே என்று வகிட்டில் மட்டும் இட்டு கொண்டு விட்டால் அப்படியே செய்துவிட்டு போகட்டும். எனக்கு ஹனுமான், அதாவது அது போதாது, தலையோடு கால் வரை சர்வாங்கமும் பூசிக்கொண்டாலே எனக்கு திருப்தி ஏற்படும் என்று அந்த சிந்தூரத்தை குழைத்து அதன்படியே செய்து விட்டானாம் ஹனுமன். அதேபோல் அப்படி சேவிக்கும் அந்த ஹனுமன் சேவிக்கும் ராமபிரான் திரேதா யுகத்திலே கலியுகத்திலே வெங்கடவனாக எழுந்தருளி கல்யாண உற்சவத்திலே இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்திலே நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த எம்பெருமானை. பகவானுக்கு முதலில் ரக்ஷையை அணிவிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. சேவிக்கலாம் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை. பக்தர்களே, இன்று பௌர்ணமி நாள் மாலையிலே அந்த திருவேங்கடமுடையான் பௌர்ணமியிலே கருட வாகனத்திலே நமக்கு சேவை சாதிக்க உள்ளான். அதேபோல் திருச்சானூரிலே தெப்போற்சவத்தை முன்னிட்டு 5வது நாளும் கடைசி நாளுமாக இன்று தாயார் தெப்பத் திருவிழாவிலே நாம் தாயாரை காண இருக்கிறோம். ஆக அந்த தம்பதியர்களை செவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, ஓம் நமோ நாராயணாய, கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே பகவானுக்கு ரக்ஷையை அணிவித்த அர்ச்சக சுவாமி அடுத்ததாக பிராட்டிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிகளுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நடத்த உள்ளார். ஆக மூலா நட்சத்திரத்தன்று ஆஞ்சநேயருடைய சிறப்பினை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். அதேபோல் ஆஞ்சநேயருக்கு எவ்வளவு பக்தி உள்ளதோ நாமும் அவ்வளவு பக்தி தன்னில் அந்த எம்பெருமானை செவிக்கலாம். திரேதா யுகத்திலே ராமபிரானுக்கு சிஷ்யனாக இருந்தவன், மிகுந்த தாசிய பக்தனாக இருந்தவன், கலியுகத்திலே வேங்கடவனுடைய திருக்கோவிலின் எதிரிலே ஆஞ்சநேயருக்கு கோவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த கோவிலிலே தாசிய பக்தனாக கைகளுக்கு விலங்கினை மாட்டிக்கொண்டு பேடி ஆஞ்சநேய சுவாமியாக நமக்கு சேவை சாதித்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த ஆஞ்சநேயர். அப்படி ஆஞ்சநேயர் சேவிக்கும் வேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே பிராட்டிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அப்படி அதன் தொடர்ச்சியே பிற்பாடு அவனது வடிவங்களுக்கு சிந்தூரம் பூசும் வழக்கம் ஏற்பட்டுதாம். சர்வாருணா என சர்வாங்கமும் கருணையால் அருணை, அந்த அருண நிறமான, அதாவது சிவப்பு நிறமான அம்பிகையை சொல்லுவது போல் கருணா சிந்துவும் சிந்தூரமானுகிறான் அந்த ஆஞ்சநேயர். தலையிலிருந்து கால் வரை சிந்தூரம் பூசியதாக சொன்னோம். ஆனால் அந்த நரருக்குத்தான் சிரசே பிரதானம் என்பார்கள், வால். அந்த நரருக்கு வால்தான் பிரதானம். ஆனால் அவன் முதலில் தன் வாலில் அடியிலிருந்து நுனிவரை பூசி அதன் பின்னரே தலையோடு கால் பூசிக்கொண்டானான். ஆக இயற்கையில் உண்டாகும் அந்த சிந்தூர பொடியை குங்குமமாக தீற்றிக்கொள்வதே நம்முடைய பெண்களின் ஆச்சாரம் என்றும், மஞ்சள் முதலானவற்றை இடித்து குங்கம் செய்து பிற்காலத்தில் அதன் பிறகுதான் ஏற்பட்டது என்றும், அப்படிப்பட்ட அந்த பிராட்டிகள் அணிந்து கொள்ளும் மஞ்சள் குங்குமம் இதோ அப்படி அந்த பிராட்டிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய வக்ஷஸ்தல நாயகிகள் அனபாயினிகள் என்று கூறப்படும் ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா, வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவித்து கொண்டு திருமலை அப்பனையும் பிராட்டிமார்களையும் சேவிக்கலாம். அவர்களுடைய கருணா கடாட்சத்தை பெறலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, ஓம் நமோ நாராயணாய, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை சேவிக்கலாம். இந்த அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை அக்னியை ஆவாகனம் செய்து ஹோமத்தை செய்து பின் லாஜ ஹோமம் பிரதான ஹோமம் பூர்ணாகூதியோடு முடிக்கிறார்கள். ஆகவே திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அடுத்த கைங்கரியமாக நாம் சேவிக்க இருப்பது அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம். அதாவது ஒவ்வொரு திருக்கல்யாணத்திலும் ஒவ்வொரு திருமணத்திலும் கூட அக்னியை சாட்சியாக வைத்து கொண்டு
மற்ற கைங்கரியங்கள் நடைபெறுகின்றன. இதோ இப்பொழுது நாம் சேவிப்பது கூட அது போன்ற கைங்கரியம்தான். அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய், ஓம் நமோ நாராயணாய, கோவிந்தா கோவிந்த. శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజక్రమణి ఉపాసనాగ్ను అగ్ని ప్రతిష్టాపనం కరిష్యే. ఓం ఏతోన్వింద్రం స్తమామ శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నా శుద్ధైరుక్తైర్వా వృద్ధాంశం శుద్ధ ఆశీర్వాన్ మమక్తే ఇంద్రశుద్ధో న ఆగహి శుద్ధ శుద్ధాభిరోధిభిః శుద్ధోర్యం నిధారయ శుద్ధో మమత్య సౌమ్యః ఇంద్రశుద్ధో హినోర్యం శుద్ధో వృత్రాణి దాశురే శుద్ధో వృత్రాణి చక్రశే శుద్ధో వాజం శుదాసరే మయి దేవాద్రమణమయ దేవహోదేః రావణజంత పూర్వేరిష్టాస్యామధర్మాసువీరాः మక్యం జిరంత మమయాని హవ్యాకోతి సత్యామన సోమే అస్తు ఏ నోమానగాంకతమచ్చనాహం విశ్వే దేవాసో అధిభోజనామే దేవీశ్వరర్వీరణకృణోత విశ్వే దేవాస హవీరగిత్థం మహాస్మహి ప్రజగామాదనోభిర్మారధామత్వశతే సోమరాజన్ జాతవేదో భువనస్య రేతయహసించ తపసో యుత్యనిశ్యతే అగ్నిమశ్వత్థాదరిహ వ్యవాహకం శమీ గర్భాంజనగన్యోమయో భూః గృహప్రదీకో కృతయో నిరగ్నికృతే సమిద్ధో కృతమస్యాన్నం గృహప్రుషస్త్వా సరితో వహంతి కృతం పిబన్ సుగిజాజిక్షిదేవాన్ అదితేన మన్యస్వ హనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిధ ప్రసువా. ఓం బ్రహ్మజిజ్ఞానం ప్రథమం పురస్తాత్ విషీమతస్సురుచో వేణ ఆవహ సముద్రయా ఉపమానస్య విత్తాసదశ్చయోని మసదస్య వివహ. ఓం భూబ్రహ్మాణమావాహయామి ప్రజాపతిమావాహయామి పితామహమావాహయామి హిరణ్యగర్భమావాహయామి. బ్రహ్మణే నమః ఇదమాసనం. సోమో ధేనుకం సోమో అర్వంతమాశకం సోమో వీరంకరమన్యంతరాద్ సాధన్యం విదత్యకం సభేగం వితస్రవణం యోదరాస తస్మై. ఓం భూస్వమవాహయామి ఓం భువర్యజ్ఞాంగమవాహయామి ఓగం సవృందమవాహయామి ఓం భూర్భవస్వశ్చంద్రమవాహయామి. సోమస్య ఇదమాసనం. బ్రహ్మణే నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. సోమాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. బ్రహ్మన్ ఓం బ్రహ్మన్ ప్రోక్షస్యామి. ప్రోక్షజిగ్నం దేవతావర్ధయత్వన్నాగస్య పుష్ణే యజమానోస్తే సప్తర్షీనాగం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమానం చ ధేః. ఓం ప్రోక్ష్య సోమ ప్రోక్షస్యామి. ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావర్ధయత్వన్నాగస్య పుష్ణే యజమానోస్తే సప్తర్షీనాగం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమానం చ ధేః. ఓం ప్రోక్ష్య పవిత్రే स्तो వైష్ణవ్యే स्तो జిగ్నయే स्तो వాయుపూతే स्तो విష్ణోర్మనసా పూతే स्तो జిగ్నస్య పావనే స్థః. పరశర పవిత్రే स्तो వైష్ణవ్యో దేవసవిధ ప్రసవనాత్ తచ్ఛత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిరాపో దేవీరగ్రే పవో అగ్రే కుమోగ్రయమం యజ్ఞం నయదాగ్రే యజ్ఞపదంధత్త యుష్మానింద్రో వృణీత వృత్రతూర్యే యూయమింద్రమవృణీర్థం వృత్రతూర్యే. ప్రోక్షితాస్థా విష్ణుమావాహయామి. మహావిష్ణుమావాహయామి. సదా విష్ణుమావాహయామి. వ్యాపినారాయణమావాహయామి. బ్రహ్మణప్రణీష్యామి. యజమానవాజం యచ్చ ప్రణయ యజ్ఞం దేవతావర్ధయత్వన్నాగస్య పుష్ణే యజమానోస్తే సప్తర్షీనాగం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమానం చ ధేః. ఓం ప్రణయ సోమాపప్రణీష్యామి. యజమానవాజం యచ్చ ప్రణయ యజ్ఞం దేవతావర్ధయత్వన్నాగస్య పుష్ణే యజమానోస్తే సప్తర్షీనాగం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమానం చ ధేః. ఓం ప్రణయ కోమప్రణయిత సమప్రణయత్వాపో దేవీ ప్రణయాని యజ్ఞకం సకం సాధయంతు నః. ఇదం వదంతి కృతమిష్టాపదాగస్సహస్రభూషం యజమానేన్యంచరీః. ప్రజాపతిమావాహయామి. ఇంద్రమావాహయామి. అగ్నిమావాహయామి. సోమమావాహయామి. అగ్నిమావాహయామి. సోమమావాహయామి. అగ్నిశోమావాహయామి. ప్రజాపతిమావాహయామి. బ్రహ్మాణమావాహయామి. ఇంద్రమావాహయామి. వసూనావాహయామి. మరుతావాహయామి. రుద్రానావాహయామి. ఆపాపస్పృశ్య శ్రీమహావిష్ణుమావాహయామి. బృహత్పతిమావాహయామి. మిత్రమావాహయామి. వరుణమావాహయామి. ఆదిత్యానావాహయామి. అశ్వినావాహయామి. పూషణమావాహయామి. కక్షమావాహయామి. కక్షదేవత సోమమావాహయామి. ఔపాసనయజ్ఞమావాహయామి. యజ్ఞదేవత విశ్వాన్ దేవానావాహయామి. సర్వదేవానావాహయామి. ఆజ్యభాగే ప్రజాపతిరిష్టనోవామి. బ్రహ్మణేరిష్టనోవామి. ఇంద్రాగిరిష్టనోవామి. అగ్నేయరిష్టనోవామి. సోమాగిరిష్టనోవామి. అగ్నేయరిష్టనోవామి. సోమాగిరిష్టనోవామి. అగ్నిశోమాభ్యాం రిష్టనోవామి. ప్రజాపతిరిష్టనోవామి. బ్రహ్మణేరిష్టనోవామి. ఇంద్రాగిరిష్టనోవామి. వసుభ్యోరిష్టనోవామి. మరుద్భ్యోరిష్టనోవామి. రుద్రేభ్యోరిష్టనోవామి. ఆపాపస్పృశ్య శ్రీమహావిష్ణువేరిష్టనోవామి. బృహత్పతిరిష్టనోవామి. మిత్రాగిరిష్టనోవామి. వరుణాగిరిష్టనోవామి. ఆదిత్యేభ్యోరిష్టనోవామి. అశ్విభ్యారిష్టనోవామి. పూష్ణేరిష్టనోవామి. కక్షాగిరిష్టనోవామి. కక్షదేవత సోమాగిరిష్టనోవామి. ఔపాసనయజ్ఞాగిరిష్టనోవామి. యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్యో దిష్టనిర్వవామి. సర్వదేవేభ్యో దిష్టనిర్వవామి. ఆద్యం తృప్యతిస్రయామి. చరం తృప్యతిస్రయామి. అగ్నే ద్యోతిరసి సమితిసి స్వాహా. అమృతమసి వారుణమసి. అంతరితకం రక్షోంతరితా అరాతయః. ప్రత్యుష్టకం రక్ష ప్రత్యుష్టా అరాతయః. చిత్పతిస్థాపనాత్ తచ్ఛత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః. వాక్పతిస్థాపనాత్ తచ్ఛత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య
रश्मिभिः देवस्वादिपदापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आज्या चरुभिः इमामे अग्निष्टगाधेनवः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुतं च नियुतं च प्रियतं च अर्पदं च न्यर्पदं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तस्य परार्थस्य इमामे अग्निष्टगाधेनवः सन्ति इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः जनाप्रभवे नमः विषत्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसुवा षष्टिशतसहस्राण्ययुतमक्षयमृपुदवानय अयन्तयद्म आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्ववर्तस्वजेत्तवर्तयदास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्मिभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासन यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः हनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्जकर्मणि औपासनाग्नौ आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रियादोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिशत्मैष्टवहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पश्पशे इन्द्रस्य इत्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीमचक्षुरातरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पुण्यमो जाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदक् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितः प्रासामीः
కలలు నీకిపుడే నిక్కలలాయనే నెలతని నోములు నేడే బలియ జగదే కలలు నీకిపుడే నిక్కలలాయనే పలికిన సగినా చక్కని గుణవంతుడు సరి నీకు మగడాయ ఎక్కువైన నీ భాగ్యమేమని చెప్పుదమే చక్కని గుణవంతుడు సరి నీకు మగడాయ పూజలు తుదకెక్కగదవే ఎల్లగా నీ కోరికలు తొల్లిటి మీ పూజలు తుదకెక్కగదవే ఎల్లగా నీ కోరికలు अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिक्कजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अथो भागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्डि शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावते तेजोपते संयमने रक्षोपते सिन्धुपते गन्धवत्यलकापते यशोपते तिष्ठदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिर्दिवर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकाचलवलगिते लवनेक्षुसुरा सर्पितशिक्षेर सुत्तोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्भो प्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशालमल पुष्पराख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यपारियात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुषहारीलावृतभद्राश्वकेतुकमालक हिरण्यकरमणक गुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकभस्ति पुण्णाकगन्धर्व सौम्यवर्ण भरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेकजन्मसु यः जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्थिकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वं स्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपागलोहितधामातपसङ्घातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतरासेर्वर्षसहस्रावसाने एकैक तिलापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामसान्तपनवाजपेय पुण्डरीकाश्वमेधाधि शतक्रतुपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विखडोमणीन्द्रमदानुसारविर्भक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः रक्तगुह्य धर्मपुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य
అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశార్ంగ కౌమోదయీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత వైఖానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రగారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రగారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణోఖ్యాతి వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరమాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రగారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రగారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజస్సామాధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవత్స్యమన ఆప్నువాన ఔర్వవేదలవంచారుషేయ ప్రవరాన్విత భార్గవస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అయో నిజాం భృగో సంగల్పతనయాం ఉత్తర ఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యా రాసౌ జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవీ నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి ఋగ్యజస్సామాధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సారణీ ధ్రువత్రగారుషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహో శ్యామలాంగీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనయాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాయాం శ్రీ భూదేవీ నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణీర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకజగీర్షయా కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసేత్ ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్యః సర్వదేవతాః మిమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదాన ముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు. భగవతే వాసుదేవాయ கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை சேவித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. அந்த மாங்கல்யங்களை சுத்தப்படுத்தி அதற்கு மஞ்சள் குங்குமமிட்டு அதன் பிறகு பூஜை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது அந்த மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை. திருமலையப்பன் அதாவது 108 அதாவது மகாவிஷ்ணு 108 திவ்ய தேசங்களிலே வெவ்வேறு விதமாக வெவ்வேறு நாமங்களை கொண்டு பக்தர்களுக்கு அருள் புரிகிறான். அப்படி திருப்புல்லாணி என்னும் தலத்திலே அந்த பகவான் நமக்கு சேவை சாதிக்கும் கைங்கரியத்தை மானசீகமாக சேவித்துக்கொண்டு இந்த கல்யாண உற்சவத்திலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் மாங்கல்ய பூஜைக்கு அந்த நிகழ்வுகளை அதாவது அனுசந்தானம் செய்து சேவிக்கலாம். உலகிலேயே எப்பொழுதெல்லாம் அக்கிரமங்கள் பெருகி அதர்மம் தலைவிரித்து ஆட்டப்படுகின்றவோ அப்பொழுதெல்லாம் அவதரித்தவர் எல்லாமே மகாவிஷ்ணுதான். அப்படிப்பட்ட மகாவிஷ்ணு அக்கிரமக்காரர்களை அழித்து அப்பாவிகளை காத்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக அவதாரம் எடுக்கின்ற ஆபத் பாந்தவனான பரந்தாமனுக்கு திரும்பிய திசையெல்லாம் திருக்கோயில் கட்டி பக்தியுடன் வழிபட்டு வந்தார்கள் பக்தர்கள். அப்படி ஒரு போக்குவரத்து வசதியும் இல்லாத அந்த பழைய காலத்திலே ஆழ்வார்கள் கால்நடையாக நடந்து சென்று வைஷ்ணவ திருப்பதிகளை அடைந்து
அங்கே கோவில் கொண்டிருக்கும் பகவானை தரிசித்து வழிபட்டார்களாம். தங்கள் பாசுரங்களால் பகவானை போற்றி பாடினார்கள். அவர்களால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்ட பாடல் பெற்ற திருத்தலம் 108 திருக்கோவில்களும் திவ்ய தேசங்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன. அப்படிப்பட்ட தலத்திலிருந்துதான் அந்த மகாவிஷ்ணு நித்தியவாசம் செய்வதாக ஐதீகம். இவற்றிலே பரமபதம், திருப்பார்கடல் ஆகிய இரண்டும் விண்ணுலகில் இருப்பதாகவும் அதனால் மண்ணுலகில் உள்ளவை 106 மட்டுமே. அவற்றிலே 44வது திவ்ய தேசம் ராமநாதபுரத்திற்கு அருகே உள்ள திருப்புல்லானி. அந்த மகாவிஷ்ணுவின் அவதாரமான ராமபிரான் ஆதி ஜெகந்நாதரை சேவித்து அவர் வழங்கிய வில்லை கொண்டு ராவண சம்ஹாரம் செய்து சீதா பிராட்டியை மீட்க அனுகிரகிக்கப்பட்ட தலம் இந்த திருப்புல்லானி. ராவணனுடைய தம்பி விபீஷணன் ராமபிரானை சரணடைந்து ராமனால் லங்காபுரிக்கு அரசனாக முன்கூட்டியே முடிசூட்டப்பட்ட இடம். கடற்கடவுள் அதாவது திருமால் அந்த தன் பத்னியோடு ராமபிரானை சரணடைந்து தான் இழைத்த குற்றத்திற்கு மன்னிப்பு பெற்ற தலம். கடற்கடவுள் என்றால் அந்த சமுத்திரராஜன். அப்படி தன் பத்னியோடு ராமபிரானை சரணடைந்து தான் செய்த குற்றத்திற்காக மன்னிப்பு பெற்ற தலம். அதாவது சுகச்சாரணர்களுக்கு அபயம் அளித்த தலம். இடம் புல்லவர், கண்ணுவர் ஆகிய ரிஷிகள் ஆதி ஜெகந்நாதரை சரணடைந்து பரமபதம் அடைந்தார்கள். ஆகவே அந்த சரணாகதி தர்மத்தை கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு விசேஷ தலம் என்று சிறப்பாக இந்த தலமானது கூறப்படுகிறது. திருமங்கை ஆழ்வார் தமது பெரிய திருமொழியில் 20 பாசுரங்களையும் பெரிய திருமடலில் ஒரு துணுக்கு பாசுரத்தையும் இந்த தலத்தை பற்றி அருளி செய்திருக்கிறார். திருஞான சம்பந்தரும் தமது தேவார பதிகங்களிலே இந்த தலம் குறித்து பாடியிருக்கிறார். திருவரங்கம் அரங்கநாதனைப் போல இந்த தலத்து பெருமாளும் பெரிய பெருமாள் என்றே அழைக்கப்படுகிறார். திருப்புல்லானி கோவிலிலே இருக்கும் தலவிருட்சமானது அஸ்வத்தம், அதாவது அரசமரம். அந்த அரசமரம் ஏனைய அரசமரங்களின் இலைகளைப் போல இல்லாமல் இந்த மரத்தில் காம்பு நீண்டும் இலை சிறுத்தும் அதே இலையின் நுனியில் நீண்டும் காணப்படுகிறதாம். கண்ணன் கீதையில் 1026வது அஸ்வத்த சர்வருஷானாம் என்று நான் மரங்களுள் அரசமரமாக இருக்கிறேன் என்று கூறியிருக்கிறார். மிகுந்த மருத்துவம் கொண்ட அந்த மரமானது விசேஷமாக கருதப்படுகிறது. புல்லவர், கண்வர், காலவர் ஆகிய 3 முனிவர்களும் இந்த தலவிருஷத்தின் அடியிலே தவமிருந்து மகாவிஷ்ணுவின் தரிசனம் கண்டார்களாம். அத்தனை புனிதமான இந்த அரச மரத்தின் நிழலிலே நாகப்பிரதிஷ்டை செய்து நிவேதனம் செய்த பாயசத்தை அருந்தினால் புத்திரபேறு இல்லாதவர்களுக்கு புத்திரபாகியம் கிடைப்பது நிச்சயம் என்று நம்பிக்கை கூறப்படுகிறது. கோவில் தலவிருட்சம் அரசமரம் என்பதாலும் புல்லாரண்யம் என்ற புகழ்பெற்ற இந்த இடத்திலே ஒரு காலத்திலே ஏராளமான தர்பை புல் வளர்ந்திருந்ததால் தர்பை புல்லுக்கும் இங்கே முக்கியத்துவம் அதிகம். வியாச பகவானால் அருளப்பெற்ற 18 புராணங்களிலே ஒன்றான ஆக்னேய புராணத்திலே 9 அத்தியாயங்களில் இந்த ஆலயமானது விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்படி அங்கே திருப்புல்லானியிலே பகவானும் திருமலையிலே திருவேங்கடமாக எழுந்தருளி வந்த பகவானுடைய பிராட்டிமார்களுக்கு மாங்கல்ய பூஜை நடைபெற்று மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெறவுள்ளது. சேவிக்கலாம் மாங்கல்ய தாரணத்தை. கோவிந்தா கோவிந்தா. மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து முதலில் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு மாங்கல்ய தாரணம். மாங்கல்யம் தந்துநானேன லோகரக்ஷக ஹேதவே கண்டே பத்ராமி சுபயே சாஜீவ சரதசதம். ஸ்ரீதேவ்யை நமः. மாங்கல்ய தாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்த அஸ்து. ஓம் பிரஜாபதி சோமகம் ராஜா நமசுருஜத தந்திரயோ வேதா அன்வசృజ్యంత தானஹஸ்தே குருதா அத்தः சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேன லோகரக்ஷக ஹேதவே
కంఠే బధ్నామి సుభగే రక్షధ్వం భువనత్రయం భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు ధ్రువంతే రాజావరుణో ధ్రువంతే వో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువాం. కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. వలుత చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు వలుత రాజాభరణోన్యరాంకిధేయుక్ స్త్రీ పౌత్రమగన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమామక్యస్త్రాయదాంగార్హం దీర్ఘమాయుః అసోన్యోపస్థా జీవదామస్తు మాదా పౌత్రమానందమపి ప్రబుద్ధ్యదామయక్ స్వాహా ఇమం మే వృణస్తురుధేహమత్యాజమృణయ రామవశ్వరాజకే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణామంతమానసదాశాస్తే ఇదమానో హవిర్భిః అహేడమానో వరుణేహ భోదృశకం సమాన ఆయు ప్రమోషి స్వాహా తన్నో అగ్నే వృణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడో వయాసనిష్ఠాః యజిష్టో బన్హితమస్సోషడానో విశ్వాన్ ద్వేషాగం సిప్రమమధ్యస్మత్ స్వాహా సత్వన్నో అగ్నే మమ భవతి నీతిష్టో అస్యాపశతో వ్యష్టౌ అవయక్ష్మణో వృణగమృణానో వేహిమృడీకం సహవో నయేతి స్వాహా తమగ్నే అయాస్య సన్మనసాహితః అయాసర హవ్యమోహిజేయానో దేహి భేషడిగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్స్థాః అనుమతేన్వమగ్స్థాః సరస్వతేన్వమగ్స్థాః దేవసమిదప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం కరిష్యే. ఓం అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిదః ప్రసుమా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిర్నుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుమ్రసేనోత్పజ్జన్యస్య శుష్మేనోధస్తామృతాగుం అన్ విశ్వాభుతత్వయా వయంధారాబుధన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్స్థాః అనుమతేన్వమగ్స్థాః సరస్వతేన్వమగ్స్థాః దేవసవిదప్రాసామీః
अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः औपासनाग्नौ सर्वप्रागश्चित्तार्थं ततो देवादि षट्मैष्टमहोमं करिष्ये अतितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुवा ॐ अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधे पदं समूढमस्यमागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतगितो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य यत्यस्य घा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुषा तदग् स्वाहा तद्विप्राधो विपण्यमो जाग्रवागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भवस्व स्वाहा अतितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदः प्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्जकर्मणि औपासनाग्नौ कर्मसात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्त होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व नमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदः प्रसुवा यदस्य कर्मणोऽतिरेरजं यत्वा अन्योन्यविहागरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्वान् सर्वग्स्विष्टकं सुहृदं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते सुहृदहुदाहुतेनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये सृष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा जन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्पुनरः जातवेद विचर्षणि स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समितसितेजोषि तेजोमयिधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे वाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे वाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे वाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे वाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे वाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्तदिक्मा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यन्ति सप्तयो नीरावृत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं जौर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तम् अग्निजैनं वेदज्जैनं जौर्जैनं पृथिवी जीर्णं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसेव जीर्णम् आद्यशेषम् इन्द्रायुजहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदिस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीतृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां महाश्चाक्षय्य मस्तु तृप्यन्तामदितेन्वमुक्ताः अनुमतेन्वमुक्ताः सरस्वतेन्वमुक्ताः देवसविदप्रासावीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सत्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षितमक्षित्येभूमि अक्षितमसि मामे एक्ष्येष्ठाः वरिष्ठाकक्वरेष्ठो ग्रंवचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीग स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नगितं माजीक्वरदमत्र रमेधां वष्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुवत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमुख्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदगिस्थतिवं गच्छतु नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्मातेर्लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयो भूतिः आदित्य सोमो नमः त्रयायुषं त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् बलाय सिताय सितञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय दिक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उशतीर्वमातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मथा आपो जनयथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्मी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजा मयि यज्ञस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजा मयि इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो दधातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हतासनाय कृतमया देव परिपूर्णं तमस्त्रे प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि मयितानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि इत्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि
ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्रघातिपणीं समर्पयामि यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராமா. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது வாரணமாயிரம் கைங்கரியம். இந்த வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்திலே ஆண்டாளுடைய கணவன் விற்த்தாந்தங்களை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் அந்த பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டுகிறார்கள். அர்ச்சக சுவாமியும் அன்னமாச்சாரியாரின் வம்சத்தினரில் ஒருவரும் அந்த தேங்காய்களை உருட்டி பாசுரங்களுக்கு விளக்கங்களை அளிக்கிறார்கள். அதாவது அந்த பகவானை திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும் அந்த பகவான் தன்னை வந்து கைப்பற்றி மாங்கல்ய தாரணம் செய்து அருந்ததியை காட்டி காலில் மெட்டியிட்டதாகவும் இப்படியெல்லாம் கனவு கண்டு அந்த தோழிகளுக்கு கூறும் படலமே வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக நாம் சேவிக்க இருப்பது மாலா பரிவர்த்தனம். புஷ்பங்களுக்கு விசேஷம் என்னவென்றால் பகவத் கைங்கரியங்களுக்கு மிகவும் விசேஷமாக உபயோகப்படுவது. அந்த புஷ்பங்கள் ஏங்குமாம் பகவானுடைய கைங்கரியத்துக்கு நம்மை உபயோகிக்கவில்லையே என்று. அதனால்தான் அந்த புஷ்பங்களை தன்னுடைய கரங்களிலே வைத்துக்கொண்டு பக்தனானவன் பகவானுக்கு ஆத்மார்ப்பணமாக சமர்ப்பிக்கிறான். அப்படிப்பட்ட புஷ்பங்கள் மாலைகளாக தொடுத்து ஆண்டாள் சமர்ப்பித்தால் பகவானுக்கு. இதோ ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு பகவானுக்கு சமர்ப்பித்த மாலையை அந்த ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு சாத்தி திருவடிகளை செவிக்கிறார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு சாத்திய மாலையை கொண்டு சென்று திருமலை அப்பனுக்கு சாத்துகிறார்கள். ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பகவானுக்கு மாலையை சாத்திய பிறகு திருவடிகளை சேவித்து கொண்டு அடுத்ததாக பூமி பிராட்டிக்கு அந்த மாலையை கொண்டு சென்று சாத்துகிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஏற்கனவே அந்த புஷ்பங்களை மாலைகளாக தொடுத்து பகவானுக்கு சமர்ப்பித்தவள் தான் சூடி. அப்படிப்பட்ட சூடி கொடுத்த நாச்சியாருக்கு சாத்துகிறார் மாலையை. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா, வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பூதேவி பிராட்டிக்கு சமர்ப்பித்த மாலையை திரும்பவும் கொண்டு சென்று பகவானுக்கு சாத்துகிறார்கள். ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா ஏழுமலையானே வெங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இதோ அந்த மாலைகளை சாத்திய பிறகு ஸ்ரீதேவி பிராட்டியையும் பூமி பிராட்டியையும் ஒரே சிம்ஹாசனத்திலே பகவானுடைய பக்கத்திலே இடது வலமாக ஆசீனப்படுத்தி அதன் பிறகு அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பரால கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவ வைபவம் நிறைவு பெறுகிறது. பக்தர்களே, பகவானையும் பிராட்டிமார்களையும் செவித்து கொண்டு அவர்களுடைய கருணா கடாட்சம் கிடைக்க வேண்டி செவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா. அக்ஷதாரோபண கைங்கரியம் நடைபெற உள்ளது. ஸ்ரீதேவி பூதேவி பெருமாளுக்கு அக்ஷதையை தூவுகிறார். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పేరు కళా జవరాలే పెండ్లి కూతురు పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు పేరు కళా జవరాలే పెండ్లి కూతురు పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ